Hello everyone, welcome back to another video. So in today's video I'll be sharing with you guys all my collection of branded Pakistani perfumes. So let's move on to the video, but before moving on, please hit like and subscribe to my channel and let me know in the comments below what kind of videos you would like to watch on this channel. So let's start from the right side. So the first perfume which I have is Sapphire Diamond एंड मैं मैंने इन सारे परफ्यूम्स की अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वो मैं लिंक कर दूंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं। तो सफ़ायर डायमंड इज़ माय फेवरेट परफ्यूम। इट इज़ अ ड्यूप ऑफ वर्साची ब्राइट क्रिस्टल। इसकी बॉटल भी बहुत खूबसूरत है जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो इसकी स्मेल है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैग्नोलिया and peony and very refreshing kind of fragrance, and I really like it for summers. So it's a very refreshing kind of fruity orange and grapefruit kind of perfume, and I really love it. तो इसका मैं आपको डिटेल रिव्यू जो है ना यहाँ पर शेयर कर दूँगी, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी शेयर कर दूँगी। So the question, will I repurchase it? I think yes, I will. So the next one which we have here is Cardi Kashmir, which is from the first batch of Cardi perfumes. I bought it around 6 to 7 years ago. Like this, so I really like this perfume, and इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बचा के रखा हुआ है। एंड अगर आप बात करें, इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग। इट्स अ वुडी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस विद वनीला। इट्स लाइक अ कुकी। और अगर आप बात करें कि विल आई रीपर्चेज दिस, सो डेफिनेटली अगर ये रीलॉन्च होता है तो आई विल रीपर्चेज दिस। बॉटल आपने इसकी देखी, कितनी हसीन खूबसूरत बॉटल है, और बहुत प्यारे इसकी फ्रेग्रेंस भी है। So the next one which I have is another Khaadi perfume, which is Khaadi Oso Exotic। और जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आई लव Khaadi Oso Exotic अ लॉट, और बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है। इट्स अ ड्यूप ऑफ कैरोलिना हरेरा गुड गर्ल। मैं अपनी वीडियोस में ये काफ़ी दफ़ा बता भी चुकी हूँ, और इसकी बॉटल भी बहुत खूबसूरत है, फ्रेग्रेंस भी बहुत प्यारी है। इट्स अ वनीला फ्रेश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। वनीला, कोकोनट, कोकोआ, टोंका बीन, इस कॉफ़ी, इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। स्वीट कोजी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। विल आई परचेज दिस अगेन? डेफिनेटली येस, आई विल परचेज दिस अगेन। सो ये मैं अपने अभी आपको खाड़ी की फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू दे रही हूँ। सफ़ायर की मेरे पास एक ही है, तो इसलिए मैंने वो एक ही दिखाया था आपको, सफ़ायर डायमंड। सो द नेक्स्ट वन इज़ खाड़ी एमेथिस्ट अडोर। दिस वन इज़ वेरी सिमिलर टू खाड़ी कैशमियर, बट इट इज़ लेस वुडी एंड मोर मस्की। और ये भी वनीला और बिस्किट कॉफ़ी जैसी फ्रेग्रेंस है, और वुडी है। इट्स लाइक इट्स वेरी विंटरी फ्रेग्रेंस। इट्स लाइक cozy winter vibe, sitting by a fireplace and eating nuts kind of fragrance. पैकेजिंग इसकी बहुत हसीन है, बहुत प्यारी है, लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती मुझे, क्योंकि ओपेक बॉटल है। मुझे ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट बॉटल ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो विल आई रीपर्चेज दिस? आई थिंक प्रॉब्ली नॉट, बिकॉज आई हैव अदर ऑप्शंस इन विंटर फ्रेग्रेंसेस। सो आई थिंक आई वोंट, बिकॉज आई डोंट लाइक इट दैट मच। सो नेक्स्ट अप आई हैव खाड़ी बिटर स्वीट, जो कि खाड़ी के दूसरे बैच की फ्रेग्रेंसेस में से है, जो कि एक स्पेनिश परफ्यूमर के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन बनाया था और रिलीज़ की थी। इसकी बॉटल बहुत खूबसूरत है, स्क्वायर बॉटल है, और बहुत प्यारी ट्रांसपेरेंट, और बहुत खूबसूरत बॉटल है। आई रियली लव दिस बॉटल। इसकी फ्रेग्रेंस है वनीला ऑरेंज, दैट काइंड ऑफ स्वीट फ्रेग्रेंस है। बिटर स्वीट है। शुरू में जो है वो स्पाइसेस हैं, बहुत स्पाइसी बिटर सी फ्रेग्रेंस आती है शुरू में। समटाइम्स ऐसा लगता है कि आलमंड है, बिटर आलमंड, लेकिन है नहीं। इसमें ज़्यादातर स्पाइसेस हैं, और ऑरेंजी जेस्टी काइंड ऑफ शुरू में फ्रेग्रेंस है टॉप, एंड देन इट हैज़ वनीला एंड कोजी काइंड ऑफ विंटरी फ्रेग्रेंस, बट इट डजंट हैज़ कॉफ़ी which other two had previously, the amethyst one and the cashmere one. Will I repurchase this? I think I won't, because it's not my that favorite of a perfume, so I think I won't repurchase this again. So next up I have another Khaadi perfume, which is Khaadi 021 Karachi, and this is one of my most favorite perfumes from Khaadi, and this is also magnolia fragrance, which has blackcurrant in the opening, and it is musky and refreshing blackcurrant, magnolia, flowery, that kind of fragrance, and I really love it. It's a very good summer fragrance, and I definitely adore it, and I definitely recommend it, and I will repurchase this again.
So next up we have Khaadi Love perfume, which is in 115 ml bottle. और इसकी जो fragrance है, it is lavender and floral fragrance. It is a bit soapy as well, and I like it, but not that much. I'm not a really big fan of it, but it's a good fragrance. And will I repurchase this or not? It's a musky fragrance with lavender and other floral scents. And will I repurchase this? I don't think I will, because I'm not a very big fan of this फ्रेगरेंस. और ये मैंने बस वैसे ही ली थी, तो मुझे थोड़ी पसंद आई थी खाड़ी के स्टोर पे, तो मैंने इसको ले लिया था, बट इट्स अ गुड फ्रेगरेंस. So this was my collection of Khaadi perfumes. Let's move on to the other brand perfumes. मैंने ये जो सारे perfumes हैं, ये brand wise जो है ना, इसको separate किया हुआ है. तो पहले हमने Sapphire की बात की, then Khaadi की बात की, Khaadi के कुछ पुराने perfumes की बात की, and next let's move on to the other brand, which is Bonanza. So the first which I have here from Bonanza is Bonanza Panache. Bonanza Panache is a floral bouquet kind of fragrance. It's a white floral fragrance with some vanilla in it. और इसका vanilla है या पता नहीं sugar है. It's a very sugary kind of fragrance along with the tuberose. So it's a white floral tuberose fragrance, just like in green fragrance. ग्रीन फ्रेगरेंस में स्वीटनेस है इसकी में, तो इस वजह से ये थोड़ा ऑफ लगता है मुझे. आई डोंट लाइक इट दैट मच, ऑल्दो इट्स अ गुड फ्रेगरेंस, बट मेरी कोई बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है, और आई डोंट रियली लाइक इट दैट मच. सो आई थिंक आई विल नॉट बाय इट अगेन probably. So the next Bonanza fragrance which I have in my collection is Bonanza Enchant. Bonanza Enchant, guys, let me tell you, I love this fragrance. It's a candy like fragrance with some oriental touch in it, और बहुत प्यारी fragrance है. I love Bonanza Enchant. It's a very intoxicating, very catchy fragrance, और बहुत अच्छा इसका सियाज है, और बहुत अच्छी इसकी lasting power है. बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है, लेकिन सबको पसंद नहीं आती है. तो जो लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं, पहले इसको जाकर ट्राई करें इसकी शॉप में, एंड देन परचेज़ इट. और बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्रेगरेंस है, स्वीट है, कोजी है, वुडी है, और रोज़ी फ्रेगरेंस है. इट हैज़ पचूली, रोज़ एंड एम्बर फ्रेगरेंस, एंड आई थिंक देयर इज़ अ लिटिल बिट वनीला इन इट, एंड इट हैज़ सैंडलवुड, मस्क, एम्बर बेस, and top notes mein it has mandarin and citrus notes. So it's a fresh and wintry, cozy at the same time. I really love this fragrance. So will I repurchase this? A big yes, definitely I will repurchase it, because I cannot see myself not having this perfume ever in my collection. सो द नेक्स्ट अप इज़ बोनेंजा कैरिज्मा. बोनेंजा कैरिज्मा की लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, और बहुत सारे लोग इसको बताते भी हैं कि बहुत अच्छा परफ्यूम है, एंड इट्स अ ड्यूब ऑफ बर्बरी ब्लैक. आई डोंट थिंक इट इज़, एंड आई डोंट लाइक इट दैट मच. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्पाइसी floral fragrance, or it has some oud in the background, I feel like, and it's a woody fragrance also, and I don't really like it that much. It's more leaning towards unisex fragrance than a women fragrance, so I don't think I'll repurchase it again, and I don't really like it that much. इसकी packaging भी कोई इतनी ख़ास नहीं है. So that was Bonanza Charisma for you guys. And सो नेक्स्ट अप वी हैव बोनेंजा प्योर रोमांस. इसकी पैकेजिंग देखें, आई लव इट्स पैकेजिंग, आई लव इट्स बॉटल. इसका कलर लाइट पिंक कलर की बॉटल है, सॉरी बॉटल नहीं है, बॉटल इज़ सी थ्रू, लाइट पिंक कलर का लिक्विड है. इसके जो कैप है उसके ऊपर डायमंड्स लगे हुए हैं. प्योर रोमांस, इट्स अ रियली प्रिटी बॉटल. इट्स वेरी गुड टू शो ऑफ ऑन योर ड्रेसिंग और वैनिटी, एंड इट्स रियली प्रिटी. और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो भी इसी की तरह बहुत प्रिटी, बहुत रोमांटिक फ्रेगरेंस है, फ्लोरल काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है. ग्रीन नोट्स इसमें हैं, एंड इट हैज़ मैग्नोलिया and it has lotus, those kind of fragrance it has. Also it is a very refreshing kind of fragrance, very aquatic, along with green notes. It has some hint of roses also, और bouquet kind floral, बहुत अच्छी fragrance है. And it has some citrus fruits in the opening. citrus fruits इस तरह के नहीं हैं कि जो citrus zesty वाला citrus नहीं है. It has that refreshing bubbly kind of fragrance in the opening, and it is very similar to Sapphire Diamond, although Sapphire Diamond is more similar
to Khaadi 021 Karachi, but this one is also similar to Sapphire Diamond. I really love Pure Romance. It's really awesome. I am in just love with this bottle. Let's take some time to adore this bottle, and I love it. It's just beautiful. Let's check this out. So will I repurchase this? A big yes, as you guys have anticipated. So next up we have Bonanza One and Only, which is a dupe of Baccarat Rouge 540, and I like this fragrance, but I do not like its dry down because it's very sticky and sweaty kind of dry down, and it is very much similar to Baccarat Rouge. I have tried Baccarat Rouge's dupe of Caliber Perfumes, and it is very much similar to Baccarat Rouge. It is like a cotton candy, and it is very airy and very sweet kind of fragrance, with some molecular kind of effect in the opening, because it is sweet, it is sugary sweet, and opening me it's like cotton candy. It's just like cotton candy, if I have to explain it. Will I repurchase this? I think definitely not. I'm not a fan of this fragrance at all. So this was all from the Bonanza Perfumes range, and next let's move on to Jadot Perfumes collection of mine. So the first one which I'll be sharing with you guys is Jaydorflora. This is one of my most favorite perfume of all time. This is a rose, jasmine and musk perfume, एंड इसकी पैकेजिंग कोई मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं. इट्स अ पर्पल बॉटल, और शेप वाइज और बाकी आई डोंट रियली लाइक इट दैट मच इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग. इसका कैप भी कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन जो इसकी परफ्यूम की खुशबू है, मैं आपको इसका क्या बताऊं कि एक बार इसको आप सूंघ लें तो आपका दिल चाहता है कि बार बार इसको सूंघते जाएं. इतनी हसीन फ्रेगरेंस है, फॉर्मल, एलिगेंट, ग्रेसफुल, इस काइंड की ये फ्रेगरेंस है. बहुत खूबसूरत है, सर्दियों के लिए भी, गर्मियों के लिए भी, डे के लिए भी, नाइट के लिए भी बहुत प्यारी है. Will I repurchase it? Definitely yes, because I cannot keep my perfumes collection without this Flora perfume. नेक्स्ट वी हैव जेडॉट्स रूबी, जो कि छोटी जो परफ्यूम है जेडॉट के उनमें से है, और दिस वन इज़ kind of woody and citrusy and oud and floral kind of fragrance. I don't really like it that much. I had just got it, और बस ये मेरी collection में पड़ा हुआ है. I don't really wear it that much, so I will not definitely repurchase it. So next up we have Marjan perfume from Jadot. It is kind of a chocolate perfume. I don't know why it feels like chocolate. It's like orange flavor with chocolate, and it's a sweet fragrance. It is woody also. It is citrusy, very citrusy. So it is a very lemony, citrusy, orangey kind of fragrance, and it has woody notes in it too. So citrus के साथ woody बहुत ज़्यादा जाता नहीं है, तो इसलिए I don't really like it that much, but it is in my collection, so I try to finish it, but I will not repurchase this again. So next up we have another citrus fragrance with woody effect, which is Jadot's Pleasure, and this is also one of my not very likable perfumes, or it's a citrusy perfume along with woods and some florals, but it also has some loud florals. I don't know, the florals in it I don't really like that much. मैं इसको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड बस एक बार ही ख़त्म हो जाए तो आई थिंक आई विल नॉट रीपर्चेज दिस वन अगेन ऑल्सो. So let's set this aside, and the next Jadot perfume which I have is Dot Ember Light, and इसके नाम के बरक्स this does not has amber in it, and it is more of a fruity, refreshing, summery fragrance. It is more of the like जो आप लोगों ने देखा होगा बॉडी स्प्रेज मिलते हैं ड्रग स्टोर पे. इट्स मोर लाइकली दोज, सॉरी बॉडी स्प्रेज नहीं, बॉडी स्प्लैशेस जो मिलते हैं फ्रूटी काइंड के, उस तरह की ये फ्रेगरेंस है. वेरी बबली, वेरी यंग. इट हैज़ ग्रीन एप्पल इन इट एंड अदर फ्रूट्स एज वेल, and somewhat floral, but I don't really like it that much that I will repurchase it. So I think once I'm finished with it, I'm done. So the next Jadot fragrance which I have in my collection is Jadot 502
for her, which is my most favorite perfume also from Jadot's range of collection. And this one is a very beautiful, again citrus woody kind of fragrance, but very elegant, very formal, elegant lady type fragrance or floral fragrance hai. But I really love this one. It is very well made and very well mixed together, and it's a really nice fragrance, and I cannot see my collection without it. And once it is finished, I am definitely gonna repurchase this one. अच्छा, ये जो मेरे पास बॉटल है, इसका जो कलर है जूस का, इट हैज़ गॉन लाइट, बट लेट मी क्लैरिफाई यू कि ये पहले जो इसका जूस का कलर था वो लाइट ही आता था. अब ऐसा हो गया है कि ये बहुत डार्क कलर का जूस आने लग गया है इस 502 का. तो आई डोंट नो इन्होंने फॉर्मुलेशन चेंज की है, फ्रेग्रेंस भी चेंज हो गई है या नहीं. आई विल हैव टू ट्राई द न्यू वन एंड देन आई लेट यू नो. Will I repurchase this? Definitely yes. So the last perfume in my collection here is Eden Robe Trance perfume, which is a musky, floral, woody kind of fragrance, and it's really pretty fragrance, but the woods in it are somewhat oud type, and which I don't really like that much. So will I repurchase this or not? I think not. Once I'm done with it, I think I'm done. अच्छा यू गाइज़, ये वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, तो जो मैंने नए परफ्यूम्स परचेज़ किए हैं वो भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी. सो आई हैव रिसेंटली बॉट बीच ट्रीज़ chick perfume, which is here, and it is a part of my collection these days, or it is also a summery fragrance, and it has some coriander kind of note, and it is a cooler perfume which is musky also. So this is that. It's a very cool, musky, floral, spicy and coriander perfume, and it also has patchouli. It is very sharp and that kind of fragrance. It also is citrusy somewhat, but I don't really like it that much, so I will not repurchase this. So another one which I have bought recently is Maria B's Gaia perfume, which is kind of guava, sweet and floral, fruity, that kind of perfume, and I really like it. Will I repurchase this? I might be. I will rethink about this. I might repurchase this because I really like the fragrance, but whether do I like it that much to repurchase it, I don't really know, and I am not really sure. जब मैं इसको थोड़ा सा wear कर लूँगी, then I will be able to let you guys know very clearly whether I would like to repurchase this or not. So that was Maria B's Gaia perfume. And I have two perfumes from Ethnic Perfumes collection. The first one is Red Paradise, and it is a very candy-like, sticky, ambery, that kind of fragrance, very sweet, woody bhi hai. I like it, but I don't really like it that much to go and repurchase this, but it's a good fragrance and it's very pretty. But repurchase करने वाली शायद मैं ना करूँ. वैसे आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं. जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आई वॉन्ट repurchase this, वो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, बिकॉज आई हैव अ वेरी ह्यूज परफ्यूम कलेक्शन. सो मेरे पास जो रिपीटेटिव होती हैं या जो मुझे बिल्कुल ज़रा सी भी नहीं पसंद होती, मैं उनको भी रीपर्चेज़ नहीं करती हूँ. सो यू गाइज कैन डेफिनेटली परचेज दिस. इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस. So next we have another ethnic perfume, which is ethnic Ombre Indigo, and it is a very good fragrance. It is sweet, it is iris, powdery, and more very similar to Lancome La Vie Belle kind of fragrance, and it's very pretty fragrance, and I definitely like it, and I will definitely repurchase this one. It's a very nice fragrance. I don't know why it is not available on their website, but it's a very nice fragrance, so I will definitely repurchase this one again. So I think you guys, that was all for this video. I hope you liked it. That was all my perfumes collection of all the local brand perfumes, and it does not contain any dupes perfumes which I have, or any kind of secret sentence stories or caliber perfumes. It's just Pakistani brand perfumes, and this is my collection of whole Khaadi, Eden Robe, Sapphire, Bonanza, and the Ethnic and Maria B and Beechtree, those kind of fragrances. So I hope you liked this video. If you did, please hit like and subscribe to my channel, and let me know in the comments below what kind of videos you would like to watch on this channel in the future. Thanks for watching. Bye.